Hello everyone, welcome back to yet another episode of Health Bar. हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बातें कर रहे थे एंड वी हैव अनदर 2 days टू गो एंड टुडे आई विल बी कल मैंने स्क्रीनिंग की बात करी, कैंसर की स्क्रीनिंग की एंड आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर की स्क्रीनिंग कौन से एज ग्रुप में कब कब करानी होती है और कितने दिनों में ये करानी होती है. So I'm going to be discussing this today. Without much delay, I would request Ranjana ji to please come forward and conduct the morning prayer. मीनाक्षी मैम, नमस्कार मीनाक्षी मैम। आज दिनांक 20 मई 2022 वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सर्वप्रथम मैं स्वस्थ गुरु डॉक्टर के अग्रवाल जी को सादर नमन करती हूँ। तदुपरांत एससीएफआई टीम के सभी सदस्यों को सादर सस्नेह नमस्कार। आज की ईश्वरीय महिमा की स्तुति इस प्रकार प्रस्तुत कर रही हूँ। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुछ की, घंटी बज जाए कब कुछ की, मौत हरदम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला, जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेद की कहती एक एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव चोले को कर ले सफल, ढील दी इसमें पल की नहीं। टूटे सांसों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। थैंक यू मीनाक्षी मैम। ओवर टू मीनाक्षी मैम। Thank you, Ranjana ji, for that lovely prayer this morning. So we'll start off with our topic. So we're going to be discussing about cancer screening. So सबसे पहले समझते हैं कैंसर स्क्रीनिंग क्या है. कैंसर के कोई भी लक्षण आने के पहले जब हम स्वस्थ स्थिति में एक जांच कराते हैं देखने के लिए कि कोई कैंसर के कोई लक्षण आगे आ सकते हैं क्या, या फिर हमारे बॉडी के कोई भी टेस्ट से हमें ऐसा पता चल सकता है कि कैंसर शुरू हो रहा है. That is the cancer screening test. So by definition, the person is not going to be symptomatic. अगर पर्सन को सिम्टम्स आ रहे हैं कैंसर के तो फिर वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाएंगे, फिर वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे. So cancer screening is done on healthy individuals and it is most of these tests are absolutely safe. And जो भी इनके टेस्ट कराने के जो डिफिकल्टीज जो भी आती हैं,
they are much less than the benefits that we get from any of these cancer screening tests. So 25 से 39 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं? You just need to get cervical screening. This is for women only. Cervical cancer screening जो है आप ये करवा सकते हैं. Pap smear is one of them. It's recommended for people it's recommended at age 25. So ये this is one of the this is the test only that you need to get done before the age of 40. 40 की उम्र आने के बाद आपको 4 कैंसर से आपको स्क्रीनिंग आपको करानी है. So breast cancer screening, it is recommended beginning at age 45. 45 की उम्र के बाद में आपको breast cancer screening शुरू कर देनी. Some people who have a strong family history और कोई भी और inclination है कि इनको breast cancer हो सकता है, they can even start getting tested at the age of 40. So mammography is the one of the important ones. इसके अलावा self exams जो है, I believe at the age of 40 you should start getting it. Cervical cancer screening, so ये 25 साल से ही आप most likely करवा रहे होंगे, and if not, then you need to start it right now. Colorectal cancer screening recommended for everyone beginning at age 45, males and females both. They will get the colorectal cancer screening, colonoscopy and sigmoidoscopy. ये 45 की उम्र में शुरू करेंगे, and 45 के बाद में prostate cancer screening भी इनको शुरू कर देनी चाहिए. So this is at the from the age of 40 to 49. These are the screening recommendations. 50 plus के लिए breast cancer will continue, cervical cancer will continue, colorectal cancer will continue, and lung cancer की screening भी आप अगर आप smoker हैं या पहले स्मोक करते थे तो लंग कैंसर की स्क्रीनिंग 50 की उम्र में आपको शुरू कर देनी चाहिए. सो इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग भी आपको 50 के बाद भी आपको करवाते रहना है. सो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड यू बी स्क्रीन्ड? सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से कैंसर को कितना जल्दी हमें डिटेक्ट करना है या फिर कितना जल्दी हमें स्क्रीनिंग की टेस्ट करनी है? देयर आर 2 थिंग्स दैट वी सी. नंबर 1 इज द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, कि 2 टेस्ट के बीच में कितना समय है कि डिजीज जो है एक स्टेज क्रॉस ऐसा कर जाएगी कि वो ट्रीटमेंट इसका मुश्किल होगा. सपोज देयर इज अ कैंसर दैट जो बहुत जल्दी फैलता है तो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट भी और फ्रीक्वेंटली होंगे. एंड इफ देयर इज अ कैंसर जो जिसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन बहुत कम है तो इस कैंसर के लिए 2 स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो दूर होंगे. ठीक है. And then the sensitivity of the screening test is another thing that needs to be taken into account before deciding how frequently you should be screened. So cervical cancer इसमें 2 टेस्ट होते हैं. There is an HPV test and a Pap test. Every 5 years it has to be done. And या फिर आप सिर्फ एक Pap test अगर करा रहे हैं तो हर 3 साल में आपको ये कराना है. So cervical cancer अगर आप दोनों टेस्ट एक साथ करा रहे हैं तो हर 5 साल, और अगर एक ही करा रहे हैं तो हर 3 साल आपको ये कराना है. Colorectal cancer, इसके there are some stool based tests which is the fecal immunochemical test. This is a little expensive. ये हर साल आपको कराना होता है. Then you have a GFOBT test. This is also a stool based test. So if you have a very high risk of colorectal cancer, then you might get this one done every year as well. एक DNA test होता है. I won't recommend that. That is done every 3 years. Colonoscopy जो है ये हर 10 साल करानी होती है after the age of 45. Every 10 years you must get the colonoscopy done. CT colonography होती है जो हर 5 साल में करा सकते हैं, और flexible sigmoidoscopy होती है जो हर 5 साल आपको करानी पड़ती है. So this is how frequently you should get these tests done. So the most important here is colonoscopy every 10 years. So healthy lifestyle choices for everyone.
I'll discuss this at the end. So I don't have any symptoms. Do I need to still get tested? Do I still need to get screened? The answer is that yes, because screening typically and by definition वो लोग कराते हैं जिनको कोई symptoms नहीं होते. So do I need to get screened? Yes. जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वो सब टेस्ट आपको फ्रीक्वेंटली कराने हैं. बाकी जो टेस्ट हैं उनकी जो स्क्रीनिंग बाकी जो कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग इज नॉट वेरी सेंसिटिव या फिर इतना फ्रीक्वेंटली हम नहीं कराते. दिस वुड बी डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हिस्ट्री टू हिस्ट्री. सो यू डिस्कस विद योर फैमिली फिजिशियन कि कौन कौन से आपको कैंसर की स्क्रीनिंग आपको करानी है. I'm not sure where I can get a screening test. How do I find out where to go? So firstly, your doctor will recommend कि आपको कहाँ करवाना चाहिए. इसके अलावा जो भी आप suppose it is colorectal cancer, so you can just see कि आपके जो पास में हॉस्पिटल है उसमें कोई GI का डिपार्टमेंट है कि नहीं. अगर है तो 101% there would be a facility to get the screening test done. So it's best to go to that hospital and get it done. So let's say breast cancer. So this mammography जो है most of the places जहाँ पे imaging studies होती हैं वहाँ पे you will be able to get it done. So that's about the location कहाँ करवाना है. I'm overdue for screening because of the pandemic. Is it safe to get screened? I think now the pandemic is हम कह सकते हैं कि we are done and dusted with it. Most likely we are done and dusted with the pandemic, and it is safe at the moment to get yourself screened. Just make sure that you follow all the precautionary measures. So is there an upper age limit for getting the colon cancer screening done? So officially speaking, yes. You still need to get screened every 10 years. But after a particular age, if you have a lot of risk factors, then your doctors might ask you to get a visual one, depending on the patient. So there are some patients who have been asked to get the visual screening test done after a particular age क्योंकि उनको bleeding की risk थोड़ी ज़्यादा होती है. So again, this depends on person to person, but you should be getting colon cancer screening done every 10 years after the age of 45. How is early cancer detected? So there are two ways of detecting early cancer. एक तो early diagnosis होती है जिन लोगों को symptoms आते हैं they need to get the diagnostic test done as soon as possible. जैसे ही symptoms आते हैं, so there are few of the symptoms of cancer that are very typical, जैसे कि आप malaise है, loss of weight है, loss of appetite है. These things are very generic and it's difficult to say at this age, but इस तरह के अगर किसी को symptoms आ रहे हैं more than 10% of body weight if you are losing, then you need to be worried and you need to see what is going on. So ये screening tests जो हैं they are the second method जिससे हम early cancer detect कर सकते हैं. This is done on healthy individuals जैसे मैंने आपको बताया, and this is what is recommended. So before you have the symptoms itself, you should be getting the screening test done. अगर हम कैंसर के लिए सबसे कॉमन टेस्ट पूछें तो दैट वुड बी अ बायोप्सी. जैसे ही सिम्टम्स आते हैं और लोकलाइज हो जाता है कि दिस इज द particular organ that is involved, हम लोग उसका बायोप्सी करवाते हैं and we get to see some information regarding the cancer in that. So एक ही organ में अलग अलग तरह के cancers हो सकते हैं, not at the same time of course, but there are a lot of possibilities. So getting a biopsy done will give us a lot of idea about the treatment, about the how to get rid of it, and about the prognosis as well. मतलब कि उससे कितना जल्दी उससे कोई ठीक हो सकता है. That also will be told to us by the biopsy. So once you have cancer,
then a biopsy is the next step. क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन पर डिपेंड हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? प्लीज रिप्लाई. विदाउट कीमोथेरेपी डिपेंड्स ओनली ऑन आयुर्वेदिक. See, there are certain kind of breast cancers that spread very, very fast, and they can involve other organs as well. So, if your Ayurvedic medicine is not going to work very fast, I'm not very sure about, how कौन सा मेथड इसमें यूज होता है, कौन से मैकेनिज्म से आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर ठीक करती है. सो आई डोंट वांट टू dismiss any sort of medical field on this platform, but अगर समय लगाएगी आपकी दवा तो that is not a very good option in cancer, because ये अगर फैल गया दूसरे organs में, then it will be very difficult to treat even for allopathy or for the other streams of medicine. So you speak to your doctor and ask them how quickly can it be treated with your Ayurvedic medicines. So that's all from us today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another